Good morning children, how are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. So children, welcome back to the online classes from Wisdom School. And children, you all must have also enjoyed your summer vacations, and I hope you all have done your holiday homework as well. So children, one thing I would like to remind you that you all have to submit your holiday homework worksheets by 8th of July. Alright. So children, I am your reasoning and computer teacher Prachi, and today we will quickly recall what we have done in our online classes till yet in reasoning also and in computer also. Okay. So firstly children, we will talk about reasoning. In reasoning we have done 3 chapters till yet. First one was patterns, the second chapter was measuring units, and the third chapter was geometrical shapes. Okay, and all the homework and worksheets and lectures are already provided to you. Okay, I hope you all have also done the revision of these chapters. So children, today we will begin with our class of computer. Okay, we have already done the introduction and now we will continue from where we have already left the chapter. In computer children, we have started our first chapter. Okay, so come, let us start our class of computer. So children, this is your computer book. Okay, and I have already given you a brief introduction about what is computer, and we have started our first chapter, which was computer, a machine. In that we have learnt about types of computers, which are desktop computer, laptop and tablet. Okay, and even I have asked you to color this picture of computer. So I hope children you all have colored this picture. And next children, we have studied about natural things and man-made things. Then today we will start about machines, which are man-made things. Okay, so we will talk about machines which are man-made. Okay, and children, you also have to underline the important terms which I am underlining in the book. So let's begin. Look at the picture of machines. These are also man-made things. Okay, so यहाँ पे children हमारे को देखो points given है. You can see here. First point जो है children, यहाँ पे हम देख सकते हैं many machines run on electricity. Okay, underline the word electricity. So children, जो first point है इसमें हमारे को machines given है which run on electricity, जो electricity की help से चलती है. Okay, और we can make it work by using the electricity. So first is the washing machine, second one is the mixer grinder, and third one is the refrigerator. Okay, so these are all household things. Okay, you all can see these things at your home also. Okay, now next children, in the next point you can see some machines run on fuel. Okay, अब यहाँ पे children जो आपको machines given है, these two machines, first one is aeroplane and second one is car. So बच्चों, ये जो दो machines हैं, these run on fuel. Fuel means like in diesel, petrol. So these are called as fuels. So आपको ये याद रखना है children कि फ्यूल पे किस टाइप की मशीन्स चलती हैं, these aeroplanes and car. Okay, now next we will talk about the machines which will work with human power. Human power means children, हमारे को हमेशा एक human being required होगा to run these type of machines. So first type is rickshaw. आपको यहाँ examples given है the machines which work with human power. First one is rickshaw, the second one is sewing machine, and the third one is boat. Okay, rickshaw also runs by one human being. Okay, he drives this cycle and then by the help of that you can travel on this
on this machine, okay, or you can call it rickshaw. Now next one is sewing machine. So ये भी एक टाइप की मशीन है चिल्ड्रन, which runs by human power. और जो थर्ड वन है चिल्ड्रन, it is boat. It runs in water, okay, and it is run by the help of human power, okay. आपको पता होगा चिल्ड्रन, हमेशा एक पर्सन रिक्वायर्ड होता है बोट को चलाने के लिए, ओके. नेक्स्ट चिल्ड्रन, मशीन्स हेल्प अस टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. सो मशीन्स जो होती है चिल्ड्रन, आप देखोगे यहाँ पे हमने कितने टाइप्स की मशीन देखी है. द मशीन विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, द मशीन विच रन ऑन फ्यूल, and the third one is machine which run with human power, okay. So machines जो होती हैं वो हमेशा children it gives us help to do different types of work, okay. हम अपने different types of work जो होते हैं वो complete कर सकते हैं by the help of machines, okay. For example children, अगर हम यहाँ से किसी भी एक टाइप की मशीन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल कार, वी विल टेक कार. इफ यू वॉन्ट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो यू विल यूज दिस मशीन विच इज कार एंड इट रन्स ऑन फ्यूल, ओके. एंड इन केस चिल्ड्रन, आप मम्मी से अगर बात करोगे, देन शी विल टेल यू दैट शी वॉशेज योर क्लोथ्स, ओके, इन द वॉशिंग मशीन एट योर होम, ओके. So she will tell you about washing machine, okay. It is also very helpful to clean your clothes, okay. Refrigerators जो होते हैं children, आप उसमें अपने food products को store करके रखते हो, so it is also very helpful machine, right. Now next children, all machines have some things in common. हर टाइप की मशीन जो होती है children, it has some things in common, okay. सो ये भी हम आगे पढ़ेंगे चिल्ड्रन चैप्टर में, दैट डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स हैव द वन थिंग कॉमन इन देम, ओके. सो वन थिंग इज लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे चिल्ड्रन, जो ये मशीन्स है, वॉशिंग मशीन, मिक्सर एंड रेफ्रिजरेटर, सो दीज ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मशीन्स, दीज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. तो एक कॉमन थिंग क्या हो गई तीनों मशीन्स में, इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज these three types of machines run on electricity, okay. Now next, here we are talking about machine children, okay. You can see in the picture. So यहाँ पे हम क्या learn करेंगे children, that machines work very fast. First point, okay. जो machines होती है children, it works very fast. बिल्कुल भी time नहीं लेती है machine to complete its work, okay. Now the next one is machines save our time. आपको पता है चिल्ड्रन, जब भी आप मशीन की हेल्प लोगे कोई भी वर्क को करने के लिए, देन योर वर्क विल बी कंप्लीटेड वेरी सून, ओके. सो टाइम पे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा. थर्ड वन इज मशीन्स मेक आवर वर्क इजी. सो मशीन की हेल्प से चिल्ड्रन आप अपने वर्क को इजीली कंप्लीट कर सकते हो, ओके. आपका वर्क इजी हो जाएगा कंप्लीट करना, ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज मशीन्स कैनॉट वर्क ऑन देयर ओन. सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, दैट मशीन्स ऑलवेज रिक्वायर सम सोर्स टू कंप्लीट इट्स वर्क, ओके. अपने आप मशीन कभी भी अपना काम कंप्लीट नहीं करेगी. ईदर इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी टू कंप्लीट द वर्क, और फ्यूल and also human power, okay. So मशीन अपने आप वर्क नहीं करती चिल्ड्रन, या तो इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है या फिर फ्यूल की नीड होती है मशीन को वर्क करने के लिए, और ह्यूमन पावर की नीड होती है, ऑलराइट. सो ईच मशीन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ओके. सो चिल्ड्रन जो मशीन होती है, इट हैज डिफरेंट पार्ट्स, ओके. सो डिफरेंट पार्ट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो एक मशीन का फॉर्म ले लेती है, ओके. सो दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. अब मशीन के जितने भी पार्ट्स होते हैं चिल्ड्रन, ऑल दोज पार्ट्स वर्क टुगेदर इन कॉम्बिनेशन, ओके, सो दैट द मशीन कैन कंप्लीट इट्स वर्क और पर्टिकुलर टास्क विच इज गिवन टू द मशीन, ओके. सो चिल्ड्रन
Today you have to again revise what we have read in the class, okay? And tomorrow we will start with our next topic. So that's all for today's class, children. Thank you for watching.